Okay, so the internet connection is now stable. And yesterday night we have just go live, but due to the bad internet connection, we stopped the live streaming. But now we can see that streaming drops in some few minutes. If you are new, just comment and like. Is my voice clear? If yes, just comment yes and no. In last revision session, we have revised the how to connect the backend to our database with the help of URL. Okay, we use MongoDB at last, but in this particular session, we just revise the all necessary things that we have need to create a project in backend development. Okay, so in this particular revision session, we just revise what is an authentication. In this particular revision session, we just revise what is an authentication, what is an JWT token, and how we create and organize a sign up, login, and logout page in a full stack project. So whenever in case we have to need to update changes, we can easily change. Okay. So right now the time is 12:33. We start our streaming at 12:36. We just wait 2 minutes. Is maybe some internet connection issue. So just check the voice quality from that stream. Just wait 2 minutes. Is maybe guys, what is an authentication? What is an JWT token? And how we JWT token and how we create and organize a sign up, login, and logout page in a full stack project. So whenever in case we have to need to update changes, we can easily change. Okay. So right now the time is 12:33. We start our streaming at 12:36. We just wait 2 minutes. Is maybe some internet connection issue. Okay. So the voice quality is okay right now. So let's start the streaming. Okay. If anybody who are learning backend development and revising their backend using Node.js, so this streaming is for you. Okay, let's start it. Okay, so here we can see that this is a notes that will be I taken from our virtual code YouTube channel. If you are learning backend development using a JavaScript or Node.js, this is the best notes for you. So you can simply use this. Okay, so now let's start the streaming revisions. Okay, so here it is in our folder. The folder name is authentication. In this particular folder section, we have setup of backend where a user can simply sign up, user can simply log in and log out. Okay, so let's create. Before starting, we have to install some dependencies. So we will work without any problem. Okay, so here's some dependency bycrypt. Bycrypt is a nothing, it's a node package manager that's used to prevent your password and encrypt into a like just prevent your password from different with the uses of some hashtags and some keywords. So no one can access even a database user can don't have a password with the help of Bigread. Okay, simple. And cookie parser is nothing just like if you are creating an account on any website. Okay, and you just wait and use it. So they will not log out default until you don't log out. So it will log in your browser for the 3 months, 2 months, 1 day, 7 days, 6 day. It will be organized with the help of cookies parser. Okay. And .NET it is an where the your uh file is just like uh .NET like just used to your happy file that you want to reveal publicly. So you
put that particular file in .env. Okay, and Express is nothing. Express is just like a Node.js framework manner. Okay, and JWT token, whenever user create an account and log out the account, server with the help of JWT token, we have create a token so we can authorize the user is okay. That's it. And Mongoose is nothing. Mongoose is used to handle the database. Okay, so Mongoose is just less like a framework or library of an Node.js. Okay, and node is just nothing. It's just simply run the server automatically whenever you change anything in the code. Okay, so we have so with the help of node we don't need to refresh our server again and again. Okay, that's it. Okay, so now let's close this file and we start the from our first file. That's it. Okay, first thing we have import the express.js from express and .env file, and that is in connect db. Okay, we will understand all these imports. Okay, so don't worry. I studied this topic yesterday and I still not clear all the concept, but yeah, I know a basic idea of how the things gonna work in that particular code base. Okay, and now let's start the okay. So we use the app.use express.json. Okay, that is a middleware just simply convert the body data into an JSON-like format. Okay, simple. This is just work like a middleware. And what is an app.use? Here we just assign our root. Okay, just okay, that's a root. We write API because whenever we just perform to use the routing from one to another and the routing will change dynamically, we fetch the data. That will all performance by with not directly but indirectly we just simply assign the API there. Okay. And auth route is just is the place where we just import our all the routes. Okay. So API is the default value and auth route is just like after the API is any route like a home page, login page that will be simply concatenate with in there. Okay, that's it. And what is use dot cookie parser? Cookie parser is just it's like an this can also work as a middleware. We study is later, but first we just database to our connect our database to our Mongo. We connect our database first thing. So we have already successfully created a database, a MongoDB at last. Okay, this is an server-based, cloud-based storage. Okay, you don't need to install MongoDB. You just simply work with the help of a database as well. Okay, so the internet connection is literally okay. So it will connect it. So you can see that we have assigned the function connectdb. Okay, so we assign this function in that particular config file. So we created db.js, a database.js. It is an function. It is an file where we have just write our function to connect database. Okay, so that's a const mongo URL process.env mongo URL. Okay, mongo URL is just we have imported from .env file and we use a .env config
So we config the value there. Okay, and we just simply connect MongoDB async try. Okay, this is a function because it is an async function because it will take time. Okay, if we perform any operation that takes time, we simply use the async function. Okay, and try and catch is used to handle the errors. So just put it all. We simply write the await mongoose dot connect and write your URL there. You can simply write the direct URL. You can also assign that URL in that particular variable and put the variable name there. That will also connect it. Okay. And we use the console dot we can check the database is successfully connected or not. Okay. And catch error is just simply catch the error. So we just and whenever the function is successfully created, we just simply export this function so we can use it anywhere in our code base. Okay, we just simply import it. So we import that code in index.js and run the code. Okay, and let's start our server. We just simply go on terminal command and just write go to the folder first. So we use a cd second and just run the command npm run dev. That's it. That will be a module file, so we can also handle, so you can just simply successfully. Okay, so you can simply say that the server is started at port number 8000 because you can simply say that the listen is function is like a function that will run the server on that specific port. So we just simply write the server is started at port number in lexical scope, and whenever the listen function call, so they just simply route print this, and we can see that, and then we connect the DB function, and DB function is started here. Okay, database connected successfully. Okay, so now our server is successfully created, our root is successfully created. Now just run the server. So we just simply run localhost, and the port number is 8000 and enter. And you can see that the return is cannot get. You can simply the code will error no because there is nothing assigned the data and a function in that particular route. So we just simply write the API and write the home page and enter. And home page and enter. And you can see the message, this is our home page. You can see where we assign this home page. So we assigned our home page in auth root. Okay, roots folder where we assign our all the roots. Okay. So first thing you can see there are four roots there. Okay. First is auth router dot post sign up get. Basically, they have four routes for sign up page, for home page, and login page and logout. And currently, we are in home page. Okay, so and you just set queue that is our route, and that is used as work as a callback. Okay, so we assign this function and we imported as just wait. We go on auth controller where we assign our all the routes. Okay, you can simply see export. Okay, we export means we have just export this function or code to another file. So we just simply write the export, okay, and const home page. That's in async function and request and respond. Okay, whenever user go on this route, they just simply return our response. Let's say this is our home page. So just simply just change the context. Okay, this is our home page. That okay, just simply that running on port number 8000, and let's refresh it, and you can simply say check the code is changing as well. Okay, so this code is successfully connected. So we have first successfully assigned our first root there. Okay, now let's come to the main point, how to set up a sign up authentication, how to set up sign up route and login routing and logout. Okay, so let's start from the sign up page. Okay, so before creating we have to assign
and design our schema where we store all the data. So that is our schema. We also revised this already in previous revision session ki how to create a schema. You just simply need to write a variable name and just create the mongoose.schema, and here you can sign your all the values that you input and taking from the user, and the value of the inputs is a string, a number, and whatever. You can simply assign it there, and you can assign it the value will be a unique or not, or not, it will be required or not. So that's it. Okay. Okay, let's. So in this code, we just simply assign our schema. So we just write the const user schema, new mongoose.schema. Okay. If you have to create a schema, schema is nothing, is just like a blueprint where user can store the data. Okay. So in this particular sign up page, we taking input. We're taking five inputs from the user. The first is a first name, second is a last name, third a username. A username is always a unique and it's required. Okay. Email, it will be always unique and required as well for a verification. And that is in password, and that is in profile image. Okay, that is user schema. Now the next is so that is our schema, and that, and with the help of this const user, we just simply export this schema into an another folder, another file. So in that user dot model, not auth dot controller, we just simply see in that particular code, we just simply create our user. Okay. So let's understand the code line by line, and then we create a user as well. Okay. Net connection. Creating this structure that taking first name, last name, email, phone, password, and username. Okay. Whenever the user writes first name, that is simply stored in request.body. Okay. If first name, last name, email, password, and username, this is a compulsory thing. Okay. If you do not write this, you just simply send all details. Okay, and just return. Otherwise, it will come into that form, that code that will say let exist user. If await user dot find one में email जो है already है. Okay, if the email is already in there, if email user to just return a response and JSON message user already exists. Okay, const has password. It's nothing, we have to just await
bcrypt dot hash dot password. You just simply assign the variable, and in that you have to just write the code. You can simply write this is and to just take a two argument. Okay, first is a password, and second is to assign how many characters in that password. So they encrypt. So you can write 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we manually just write the 10 there. Okay. You can also write 8. Okay. Eight. Okay. Numlock is on, maybe. Okay. So now we just simply write the 8. And that is in const user. It is a variable await dot user, and created that is a built-in function that given by a mongoose to create a user. Okay, so if just like this is a basic thing, first is user input, user input, and it will check the condition. If that is, if anything is not entered by a user, they just simply return send all details, and then it's come to the second step that will find the email. If email is already exists, just simply return the user and said you are already registered. Okay, and the third part we have just simply hash password. Okay, hash password is just like if user write name and 1234 password, we just simply hash the password. Okay, the internet connection is literally so slow, but just wait to fix. Okay, and that is a code for uh this to check the existing user, and this is for by script password. And this code is just to generate a token. Okay, so let's understand how we can generate a token. So we just simply assign the variable, a blank variable that will, you can write anything, but a good practice is you should need to write a token there. And we just simply write the try catch. We just need to write a token and generate token user.id. So in just like whenever the user created an account, it will be created. And Mongo just create your ID number as well. That is created by dynamically. You cannot assign by manually. So you can simply just write the user variable there. They have all your and with the help of dot ID, you can simply put the ID there. Okay. And catch the error. Okay, and console.log user. Okay, so now you can simply see that your user ID will be stored, and with the help of user ID they just simply create a token. Okay, generate token. The internet connection is now perfect. If anyone from the learning or web development and backend, just write the comment. Okay, this is a completely beginner series. Okay, so let's start. Move to the again. So our token is successfully created there. Okay, and now we just simply pass this token into a cookies. To pass the token in the cookies, we just simply send the response to the cookies. Okay, so we just write the rest dot cookies and write the variable value here that we assign this. So we just simply write the token and the token, that is the variable. You can just simply set the let token is promises. Okay, they just pass the promises and generate token. This if a user created, and if matlab if just like JWT token generate any token that will be stored in that token variable, we just simply assign there. In the next argument we just put the HTTP only true. Is just like just we have to just copy this code and understand, because I am struggling to understand this code. Because what is the purpose of a HTTP only and secure is just like to whenever in development we don't need to write the secure, but whenever we in production phase,
you should need to write the security. And same site strict and max age is nothing is max age is used to define and assign how much the time will the cookies will not expire. Okay, so just simply go on that code and just paste the value there and just write the explain me this code in simple way. Okay, so this is an best practice to if you have to learn and fast with the help of chat GPT. Okay, so it store a JW token in the user browser as a security cookies. Okay, what the help of that? देखो, you can simply see that response dot cookie basic response cookie means name token cookie name. ठीक है, value token. ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, जैसे कि तुम देखो if you just see that will a variable. Okay, ये cookie name है. ठीक है, let token is their cookie name and that token will store the token value JWT token value. ठीक है, cookie name and JWT token value. Okay, option secure and behavior second, and the next is explanation of each option single language. Okay, so HTTP only true is just like JavaScript cannot access their cookies. Okay, JavaScript cannot access their cookies, so document dot cookies cannot read it from XSS attack. ठीक है, XSS attack क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता, बाद में just asking again. I think it's not working. So according to you, HTTP only true is used to protect the cookies and tokens from a hacker and unauthorized user. If you are just like computer science student, I just want to ask a one question from you. So in 2026, what is the best tech skill to make? Best tech skill क्या है? मतलब just like कि best tech skill if you get a job. I think I'm just learning a web development and my web development is also completed. So I'm just going for a revision. But everyone won't say that development will be taken by an AI and AI agents and that will be coded generated by AI. So this is actually correct. If you are actually a good computer science student, you know the answer exactly. He is AI can take our job, yes and no. Okay. And just like I write the pool there, is AI taking text, just I did the copy and I just want you is if you are live, just simply a question. Okay, you just write your answer in that. Okay, so because I just want an answer कि actually में लोगों को क्या लगता है, because I'm just struggling to get an internship as well. I don't lie to you, but the problem is AI actually taking a job or not? Okay, let's first thing check the internet connection is okay. Just say yes and no in a comment section. Okay. बाकी कोई नहीं, अभी बाकी स्ट्रीम तो वी हैव कंटिन्यू इन जस्ट फ्यू मिनट्स ब्रेक इट बिकॉज मेरा गला सही में दुख चुका है. I have a really bad cough for the last 3 days, but I'm still go live because I have to revise the concept and practice as well. Okay, and I just want to say that because I'm a completely beginner. Okay, so I just revise and I little hesitate to speak English, so that why I'm go streaming in English language. ठीक है? So if you are struggling to speak English, although just comment down. Okay, just comment.
because I just want, if you are struggling in English speaking as well, I can just, we can help each other to just communicate, to just speak English and revise myself. Okay. Hmm. Okay. Okay. If you are still thinking, just ask, just write the question. If you want to ask, just write the question. If you want to ask from down, okay. And I'm just asking to you, and just I'm just simply asking to you, ki, what's your perspective? If you are a computer science student, if you are doing a BCA and a BTech and BSc, whatever, a computer science related field, you just write down. Okay. Okay. And document.cookie cannot read it. Okay. And document.cookie cannot read it. Okay. Process.env.node environment production. कुकी इज सेंट ओनली ओवर एचटीटीपीएस, ठीक है। जो कुकीज होते हैं वो हमेशा पास होते हैं एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इफ सिक्योरिटी इज डिसेबल, it is in production, it will share it. Okay, so just you just simply see that production https enable and development में http जो होती है वो disable होती है, तो क्योंकि sent only over https, ठीक है। So we just simply, so in that code we just simply put the secure environment or variable to the production if equal to my production. Okay, so if the https is s, that will send the cookies, otherwise not. Okay, prevent token from being stolen over insecure network, ठीक है। So it is good practice to just improve the security as well in over the internet. Okay, and same same site strict. Cookies is sent only when request come from the same website. ठीक है, stop CSR stack, no third party request. Example, youtube.website.com, youtube.website.com is okay, but evilsite.com, just your website.com, ठीक है, no. Cookies will expire after 7 days. Sample, ठीक है, after 7 days user must log in again. Why store token in cookies instead of local storage? HTTP only secure. Okay. Accessible via JavaScript. Auto send with request, manual sending, safer from access. So cookies are more secure authentication. ठीक है, that's it. Cookies are more secure than authentication. Why no one asking a question? Is anybody not struggling to in that tech job market? Is that's like, I have a question from you. So if you are thinking AI can take an our job, yes and no. If you are thinking it will be true, just simply write in the chat section. Okay, and nothing. That's it. Okay, this is a basic question. If you are just still, yeah, there is so many chances if you are a computer science student, there if you're just applying on LinkedIn or Indeed, you're struggling to get a job. But with but if you are I just like why I'm just confusing यार, कि अगर तेरे को जॉब लग गई है तो ठीक है, आपका तेरे को नहीं लग रही है मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो just पूछ, that's simple.
it. Okay. Why store taken is cookies instead of local store? Okay. Why they giving me an interview answer? Okay, if just someone didn't you asking me a question about what is an cookies, why we use the cookies instead of local storage in JWT token? We just simply write the this code store a JWT token in a HTTP only secure cookies. It prevents JavaScript access, allows HTTP's only transmission in production, protects again protects against CSRF using same site and extra 7 days. Okay, why not anyone asking me a question regarding tech? Yeah, it's only I am confusing in that job market. If anybody is just like, I just ask you. Are you BCA student or BTech student? ठीक है. Both are computer science student. ठीक है. Both are doing coding. But which one do better? Just comment down. I think I am a BCA student, so just I am supporting BCA student as well. But if you are a BTech, you simply support in a comment section. Okay. So let's go in there and let's. So here we can see that sign up page is successfully created, a code created. Okay. And we can use the let token variable that is creates. See this, let's just simply create cookies and that token, it is a variable where it stored the token value that generated by a JWT token. Okay, that's it. And console.log user. And rest.cookies token, we just simply pass the HTTP only to true. Okay, and security just we have to, if we can't use the security true, it will not working in production. Okay, and same site split. And max age, we use max age to just what the expiry date of that particular cookies that we have login with the ID, password, and whatever that's okay. So you need to assign your max age of the cookies. Okay, and there we just simply return response.201 and user, and the user is successfully created. Okay, and error is just like internal server error. Okay, so let's start. Well, let's create our user first. Okay, so we just simply go on Thunder client, and here we can our root, and just simply go on body, just clear all the code and start from scratch. So just simply write the sign up. Okay, and just write create an empty object and let's assign the value there. We just simply write the name. No, we just creating with the help of first name, last name. Okay, so just hmm, user model, first name, last name. Okay, and we use the camel case. So just first name is codexnam. Okay, just simply codex, and the last name is. I will be back soon. Just I have the call. Okay. Why the internet connection is getting worse when I go live?
Okay, the frame rate will be dropped so much. That's why the streaming is not healthy. Is the stream health is okay? If yes, just send the thumbs up emoji, yes, and yup, anything just okay. Okay, so the now the stream quality is okay. Okay, let's go there. Okay, so we just simply write the last name, and last name is num. Okay, codex num. Okay. And my I write the channel name as well because the code is just assign a coding part, and X is just like for multiplication, and name is just my name is Naman, so I just use the name. Okay, the codex name. I used to just as a build a personal brand. Okay, and learn in public as well. And first name and last name, and then now username and email. The username is username. Okay, the username is like codex num is better. This sound good, है ना? The codex num username, and now write the password. Email now. Email is codex num 111. And why name? Just write the codex one and at the rate gmail.com. And the next is a password, and a password is also important to create an account. Just simply write the password, and the password it should be it's like 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 1 2 3. मोस्टली लोगों का वाईफाई पासवर्ड हुआ ये आई नो हर किसी का रहता है वेरी कॉमन इट्स अ वेरी कॉमन पासवर्ड टू जस्ट write the numbers from 1 to 8 and just 10 12 just that, okay, so simply just send the request and let's see what happens. Send all details. It will give and request. I know I just don't use and don't enter the profile image. And just like we have to write almost everything. A first name, last name, and username. First name, last name, and username. Okay. And email password. We have to just like a profile page is not required. So why it should give an error to just send all the details? Should we write any spelling mistake here and just check it? Password PASS password. Its spelling is correct. Email as well. A username, a last name, a first name. But still given just send all the details. Let's check and open the auth control. We have email, password, and username. So why it's given error? Just check the code. Send all details. All I already sent all the details, bro. What's the thing that left? I left this. The first name is already assigned. The last name is as well. The last name is spelling is correct. Username is spelling is correct. Email spelling is correct. And password spelling is correct. And we use the function is correct. We use the post na. Just go on the auth route and just simply for the sign up we use the post method. And the post method is already in there. And password this all दो तीन चार पांच चीजें माली है इसने they just asking me to write the 1 2 3 4 5 and these six things type string है okay. If anyone from a live streaming you understand why it's given error just comment because
आई थिंक आई शुड नीड टू कॉपी दिस। ब्रो यू जस्ट सेड डीएसए स्टार्ट नहीं हो रहा ब्रो, आई एम स्टिल थॉट कि डीएसए शुरू करूंगा, लेकिन आई नहीं हो पा रहा डीएसए, ठीक है। डीएसए मतलब इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ से डीएसए भी हम करेंगे ऑन स्ट्रीमिंग, बिकॉज यार if you are come in an interview, they just simply before they just give a task to convert this array into reverse, and वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब दे जस्ट सिंपली आस्किंग अ डीएसए क्वेश्चन, इट्स विल बी अ बेसिक डीएसए क्वेश्चन, ठीक है। बाय द वे मेरा तो डीएसए में रिजेक्ट हो गया था एक टाइम, अभी लास्ट 2 वीक पहले आई थिंक मैंने इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में, एंड आई एम रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ डीएसए। ओके, तो डीएसए भी करेंगे, ओके। डीएसए नहीं होता ब्रो इफ यू आर जस्ट थिंक कि डीएसए एरे के क्वेश्चन भी हार्ड होते हैं भाई, एरे एरे क्वेश्चन में तुम्हें एक बेसिक कोड दिखाता हूँ, रुको अभी, कि इंसर्शन का कोड दिखाता हूँ ना तुम्हें मैं। या फिर ये कोड क्रैश हो जाएगा यार, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एंड में मैं तुम्हें एक इंसर्शन का कोड दिखाऊंगा कि हाउ एन इंसर्शन का कोड काम कैसे कर रहा है, एंड वो कोड ना इतना इजी नहीं है। उस कोड को तुम देखोगे, तुम्हें देख के समझ आएगा कि भाई मतलब एक इंसर्शन कोड में भी इतना लॉजिक लगाना पड़ता होता हुआ, क्योंकि तुम्हें एक के साथ तुम्हें वैल्यू इंसर्ट भी करनी है, रिमूव भी करनी है, ठीक है। वो चीज हो जाती है यहाँ पे, के दो वोट यू हैव गिवन यू ना 15 वोट, एंड 93% लोग आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ब्रो लगता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट काफी ज्यादा हो चुके हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कंप्यूटर साइंस जब तक अंडर अंडर रेटेड था ना, तो मतलब जॉब मिल जाती थी लोग, और जब से थोड़ा हाइप में हुआ है, द सप्लाई इज विल बी मोर देन अ डिमांड, दैट्स व्हाई अ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट facing a problem to get one job and one internship, okay। एंड देखो यार, एरर समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, इट्स विल जस्ट गिव एन एरर कि यूनिक ट्रू होना चाहिए। जस्ट चेक द auth कंट्रोलर, ओके। यूजर नेम, ओके। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट FIRS फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, एंड पासवर्ड, ओके। एंड पासवर्ड इज 12345678, एंड सेंड ऑल डिटेल्स क्या है यार, सारी डिटेल तो भेज दिया है मैंने, ऑथ कंट्रोलर को मैं कंपेयर करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ये ले। एंड जस्ट लाइक किसने बोला कि मेरे को बोला फर्स्ट नेम दे दो, ठीक है, फर्स्ट नेम हमारा ये रहा, ओके। एंड लास्ट नेम भी हमने ले लिया, ठीक है। एंड ईमेल, ईमेल को मैं एक काम करता हूँ, सीरीज वाइज कर देता हूँ, क्या पता इससे हो रहा हो, बाकी इससे तो होना नहीं चाहिए। एंड देन यूजर नेम बोला, चल यूजर नेम भी नीचे डाल देता हूँ, पासवर्ड पहले डाल देता हूँ। तो वैसे सिक्वेंशियल में भी होता है यार, पता नहीं था मुझे। लेट्स सेंड सेंड ऑल द डिटेल्स। The database is successfully connected, but the why it's not showing a port number? It should be, okay. The code will be running successfully. It's not given any error. Okay. Yep. डीएसए नहीं हो रही ब्रो, मेरे से भी नहीं हो रही, ठीक है। अंकुश पासवान, मेरे से भी डीएसए नहीं हो रही, ठीक है। एंड शाहिद अरसलान, अरसलन, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा एक बार क्लियर नाम रखना। शाहिद है ना, शाहिद। भाई शाहिद भाई, डीएसए नहीं हो रही, ठीक है। डीएसए एक्चुअली में नहीं हो रही, मेरे से भी नहीं हो रही, ठीक है। पर डीएसए हम करेंगे नेक्स्ट मंथ से, और तुम भी साथ करना मेरे, ठीक है, डीएसए। और पता नहीं यार कोई बढ़िया सी
रिसोर्सेज जहाँ से डीएसए पढ़ सकूँ। वैसे तो अभी जावास्क्रिप्ट मेरी अच्छी है, सी प्लस प्लस भी अच्छी है। जावा यार, जावा से तो मेरे से हाथ जुड़वा लो। ठीक है। Why not anyone subscribe my channel? Bro, I just my live streaming is just like wait. My subscriber is right now 798. So I just asking to you simply, just please hit them 800 today. Okay. Okay, can you explain me the problem? Just wait, guys. देखो. Okay, bro. Just like we have just here is that screen. Okay. We have just write the code. Okay. देखो यहाँ पे हमने ना साइन अप का एक रूट बनाया था and that is here is our schema. Okay. In that schema we just write the first name, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एवरीथिंग। ठीक है। लेकिन जब मैं ना यहाँ पे जा रहा हूँ अपना अकाउंट क्रिएट करने ऑथेंटिकेशन में, तो ये कह रहा है कि सेंड ऑल द डिटेल्स। और मेरे को लगा कि एक टाइम पे प्रोफाइल इमेज का एरर हो सकता है कि, बट मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रोफाइल इमेज पे भी ना मैंने फॉल्स कर रखा है। फॉल्स कर रखा है तो अगर मैं वो नहीं भी डालता तो वो तब भी चल जाना चाहिए। बट स्टिल दे गिव एन एरर कि पुट इंसर्ट ऑल द डिटेल्स एंड द रूट इज जस्ट सिंपली अ साइन अप। एंड हम रूट पे भी सही है, ऐसा भी नहीं कि हम रूट पे गलत हो। तो यार तुम थोड़ा बताओ कि मतलब क्या हो सकता है। You can help simply easily if there is just send a image in there, you can just simply the here is the code. Okay, you just say कि मतलब किस किस फाइल पे जाना होगा, मैं स्विच कर दूंगा। अभी यूजर स्कीमा देख लो, मेरा मेरा यूजर स्कीमा ये है एंड दैट इज माय साइन अप पेज। ओके। ए पासवर्ड को बाइक्रिप्ट करने के लिए आई ऑलरेडी रिटर्न द कोड। ओके, जस्ट वेट। देखो बाइक्रिप्ट करने के लिए मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ था ऑलरेडी। देखो देखो ना, हैश पासवर्ड कर तो रखा है मैंने। कहाँ गया देखो ये लाइन नंबर 22 पे। लाइन नंबर 22 पे मैंने पासवर्ड को हैश भी कर रखा है बट स्टिल वो एरर दे रहा है। मैंने साइज को 8 करा, मैं एक बार को 10 कर लेता हूँ एंड फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ। देखो फिर ये फिर कह रहा है कि मतलब सेंड ऑल डिटेल्स। यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एरर कहाँ पे आ रहा है। अभी मैं थोड़ा इसको एक बार देख रहा हूँ, नहीं तो फिर चैट जीपीटी से पूछूंगा। बाकी अगर तुम्हें कोई आइडिया आ रहा है प्रो तो जस्ट बताओ मुझे, कि वो ये चैट जीपीटी पे फिर डिपेंडेंसी बन जाती है ना। इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? पासवर्ड को बाइक कर दिया मैंने ब्रो। तुम देखो कोड देखो तुम। Bro, if you are just live, so just write something because I'm waiting for you because I'm depend to you कि तुम मुझे बताओ। अदरवाइज आई जस्ट गो ऑन चैट जीपीटी एज वेल। बाकी फिर भी यार मेरे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली एरर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन चीजों को चेक कर लिया। ठीक है। बट स्टिल मुझे एरर दे रहा
उसने बोला पासवर्ड को हैश करना है, तो पासवर्ड को हैश कैसे कर सकते हैं? आई थिंक मेरी यहाँ पे फेस आ रहा होगा, ये देखो। चलो यार, फिर पता है क्या करते हैं? कॉपी कर करके पेस्ट करता हूँ, क्या बता। ठीक है। लास्ट नेम, नो स्पेलिंग मिस्टेक फाउंड। ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम। ओके, सो नाउ हमारा यूजर तो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, बट मुझे समझ नहीं आया कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक ही करी कहाँ थी। यार देखो यार, कोड इज सक्सेस, इज आवर कोड इज रनिंग सक्सेसफुली, ओके। पासवर्ड रिक्रिप्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब कोड भी अच्छे से काम कर रहा है हमारा, ठीक है। हमारा कोड सही काम कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी जस्ट मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज वी ऑलरेडी वेस्ट मोर देन 10 to 15 मिनट ऑन दिस की यार, साइन अप नहीं हो, ओके। सो जस्ट that's it, okay. So our user is successfully created. We just simply go on cluster and go on browse and check is our data is created and not, okay. And we you can simply say that we cannot print the password because if you had created your account, you just simply just write your password, no na. You can just simply that we just send the response, the first name, last name, username and email, and you can simply see that it will be there as a responses, okay. And let's check the browser collections, and here is our cluster। तो यार 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब कर दो फटाफट। 789 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड जस्ट वेट कि 800 सब्सक्राइबर भी हो जाए। लेकिन अभी नहीं हुए, एक सब्सक्राइबर रह रहा है, जस्ट लाइक कि दो बंदे सब्सक्राइब करेगा, 800 सब्सक्राइबर हो जाएगा। सो हम स्ट्रीमिंग तो कंटिन्यू करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे स्ट्रीमिंग बंद कर देंगे। वी जस्ट सिंपली गो सो डेप्थ, ठीक है, गो डेप्थ और थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, चीजों के। Okay, so here we can see here is our authentication folder. We just simply click on that folder, and now we can see that our users, okay, and you can see that our data is successfully created here, and you can see the password is something like, because the password is bcrypt, okay, with using a bcrypt library or framework, okay, that's it, okay. And whenever user login, you just simply convert this bcrypt code into a user friendly, and that will be set up your login. And let's check if our jwt token is created and not. So for checking this, we just simply go on that button and just click on, कहाँ पे आता है ये देखो, here you can see that you can simply the cookies one and just click on that, so you can simply that see that our cookie is successfully created, okay. And it and that cookie will expire automatically after 7 days if we don't log in that code, okay. सी प्लस प्लस यूज करना डीएसए में, श्योर ब्रो, डीएसए में सी प्लस प्लस मैंने करा था। आई एम जस्ट लाइक कि मैं इन्फोटेक इंस्टीट्यूट में था, सो आई जस्ट लर्निंग डीएसए इन सी प्लस प्लस। बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि मैंने बीच में छोड़ दिया और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने छोड़ा क्यों आखिर। प्रॉब्लम ये थी, छोड़ने का ये था कि मतलब डेवलपमेंट में उस समय में थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो गया था।
तो डीएसए फिर मेरे को ये था कि डीएसए मुश्किल लगती थी, और एक टाइम पे वो भी रहता है कि तुम्हें कंफर्ट जोन में रहना थोड़ा पसंद है, तुमसे नहीं होते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तुम छोड़ देते हो उस चीज़ों को। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो अभी मैं डीएसए कंटिन्यू करूंगा फिर से। मैं लिंक लिस्ट तक गया था, मैंने ट्री के भी कोड बनाए थे। हाँ, अभी लीड कोड ग्राइंड अच्छे से नहीं किया, लीड कोड भी करेंगे, बट यस कि इजी था। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स लिटरली, अगर तुम जावा, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, है ना? नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स नॉट सो हार्ड, कर लोगे तुम एक टाइम पे। यार वोट देखते हैं कितने भाई, 22 वोट्स आ रखे हैं, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही है मोस्टली, एंड मोस्टली बीटेक के बंदे होते हैं यार, बीटेक बीसीए कुछ लिखते रहो ताकि मेरे को थोड़ा पता चलता रहे कि यार बीटेक को क्या है। बाकी बीसीए भी यार, बता दो, बीसीए वाले स्टूडेंट तो बहुत है अब तो। मुझे हर दोस्त, हर तीसरा दोस्त मेरा बीसीए वाला ही है। तो तुम जो लाइव स्ट्रीमिंग पे अभी हो, चार पांच बंदे, यू आर माई ऑल्सो फ्रेंड्स, कि तुम मेरी स्ट्रीमिंग पे अभी जुड़े हुए हो। ओके। ओके, सो यू कैन सी दैट आवर अकाउंट, अब मतलब our sign up route is successfully working and created. Okay, and just let's understand the code first. We have already understand the code, so I just will be back soon into 2 minutes, because my water is empty. I need to go and fill with the water, because hydration is so important. Okay, so I'm just wait a 1 minute. I'm just coming just to fill the water with this. If you are still watching the streaming, I just want you to go and drink some water, because it's मतलब बहुत अच्छी चीज है, पानी पिया करो, ठीक है? इस चुल्लू पर पानी हमें हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प करता है। हाइड्रेशन से बहुत फायदे हैं, ठीक है? बाय द वे, आई एम trying to becoming a fitness influencer as well, and I just going for the gym for the last almost 3 to 4 years होने वाले हैं मुझे, ऐसे पता नहीं चलेगा। सो जस्ट इस पे भी कभी बात करेंगे। ओके, सो आवर साइन अप पेज इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, नाउ जस्ट मूविंग टू आवर लॉगिन पेज। ओके, तो देखो सबसे पहले लॉगिन, तो मूविंग लॉगिन, लॉगिन पे बढ़ने से पहले ना, हम ये साइन अप का जो है ना, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, कि हमने हाउ वी एक्चुअली क्रिएटेड, वी जस्ट गो एंड ट्राई कैच का ये था। यूजर जो भी है, जो बॉडी है ना, देखो ये बॉडी है हमारी, ठीक है? ये जेसन है, इसके अंदर यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा, वो सिंपली कहाँ पे आएगा, हमारे जेसन के अंदर जाएगा। और हमने जो यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर लगा रखा है मिडल वेयर दैट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, जे सिंपली दैट कन्वर्ट दैट डेटा इनटू अ जेसन ऑब्जेक्ट डेटा। ओके, और फिर वो डेटा कहाँ आएगा, वो आएगा हमारे राउट पे, ठीक है? राउट पे का है, आउथ राउट, राउट पे हमने कहा ये आउथ आउथ कंट्रोलर। यहाँ पे क्या होगा, यूजर फर्स्ट नेम लिखेगा, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, यूजर राइट एनीथिंग दैट विल बी टेकन फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है? और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज अ बॉडी। ओके, अब ये बॉडी है, एंड इफ दिस इज अ फंक्शन, इफ चेक द कंडीशन, इफ ऑल थिंग इज, अगर ये सारी चीजें हैं तो सेंड ऑल डिटेल्स कर दो, अदरवाइज मत करो, ठीक है? एंड हेयर इसका यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ ईमेल यूजर इज, इफ यूजर email is already found, user already exists, because we have write a condition that will check the gmail of a user. Okay, if they find a gmail id, they just simply return a user already exists. Okay, whenever we just created a big project, I literally don't know how to create a big project, but just like I'm just working, whenever we just hire our front end back end revision also completed,
we just create 1 to 2 project watching by tutorial, and then we just created third to fourth project with the help of an AI and my own skill. Okay, because if I'm just alone creating a project from scratch, it will be difficult for me in starting stage, and maybe I will stuck. So so first thing, but the thing is that I watch the 30-minute and 1 hour tutorial every single day and revise everything. Okay, so you can understand as well. Okay, so hey guys, thank you for the thing that कि तुमने मेरे 800 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, ठीक है, 801 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आई होप कि मतलब हाँ मेरा इस साल खत्म होते होते 10,000 का टारगेट है मेरा, एंड इट्स जस्ट लाइक वी कंप्लीटेड। आई एम नॉट अ बिकमिंग अ क्रिएटर, बट जस्ट लाइक कि मेरे को मतलब अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकूँ और तुम भी मेरी हेल्प कर सको, ठीक है। सो वी जस्ट ग्रो ईच अदर, फिर जस्ट कि हम ग्रो कर सके एक साथ। ओके, ये खांसी मेरी जान ले लेगी दोस्तों, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ अभी तो। डेवऑप्स ही पढ़ना है ना। क्या मांगते हैं आजकल, तुम्हें पता होगा अगर तुम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, दे जस्ट यू जस्ट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये कंपनी क्या मांगती है तुमसे, दे जस्ट वांट कि तुम्हें डीएसए भी आना चाहिए, एंड दे जस्ट वांट कि तुम्हें डेवलपमेंट आना चाहिए, यू हैव टू बेसिक एआई भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एआई भी जस्ट लाइक कि नॉट अ एआई की चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, नॉट अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दे जस्ट आस्किंग यू टू गिव एन आंसर how to create a AI agents use a anytime, and you need to how to host deployment, AWS आना चाहिए तुम्हें। AWS is not a basic thing, okay, I don't go so depth, but it will take a 6 to 7 months if you just becoming an expert, if you want to becoming expert in AWS. So the job description is literally fucked up, okay, and 29 student is already what for they are computer science students, so यार कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो यार तो 1 लाख तो बनता है। ओके, भाई लीड कोड कौन तुम में से कौन कौन करता है, जस्ट लाइक इफ यू एनीवन फ्रॉम डूइंग अ लीड कोड, इज एनीवन डूइंग लीड कोड? ओके, डोंट वरी, जस्ट लाइक हम मैं भी लीड कोड नहीं करता, जस्ट सॉल्व 3 क्वेश्चन and one single array ki how to insert an array, how to combine a single array, okay, these are very basic question, I just do it, okay. So just like our sign up page is successfully created, and you have this question कि ये sign up page यहाँ पर है लेकिन हम वहाँ पे कैसे यूज कर पा रहे हैं, तो we just simply export this sign up page in that auth.route, and we just simply write the home page there, and here you can see our auth route is successfully binded there, okay. And now we just simply go on there and just understand how the login route is working in backend development, okay। So सबसे पहले देखते हैं कि backend में हमने already we have created an account, okay, और इस अकाउंट में हमने क्या किया है कि फर्स्ट हमारा मतलब यूजर अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, एंड नाउ कि हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर लॉगिन करेंगे, ओके। लॉगिन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लॉगिन के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें या चीज चाहिए होती है, यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड। अगर बेसिक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लो तो तुम्हें दो चीज, पासवर्ड तो दोनों में कॉमन ही है कि मतलब पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, एंड द नेक्स्ट इज इट यू शुड बी अ यूजर नेम और योर email, okay। So now let's understand the login, so we just simply assign our root of login in that auth route, ठीक है। auth router is just like we have just used the creating a variable that's use only router, ठीक है। express js provide a server most of the modules, ठीक है, but with the but we simply import the router from express.js because we use this file for just routing and not another and any another things, okay। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस नेटवर्किंग सिक्योरिटी डेवो एडीएस यार, एक कंपनी वांट, अरे ब्रो ब्रो लगता है तुमने जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया। अभी मैं अभी जस्ट लिंक्डइन ओपन कर लूं फ्रंट एंड की इंटर्नशिप के लिए, दे जस्ट टेल मी कि तुम्हें क्या आना चाहिए, वो तुमसे एज्योर भी मांग लेंगे ब्रो। आई थिंक तुम एज्योर लिखना भूल गए, अभी वो भी मांगेंगे तुमसे। और अभी एक नई चीज बहुत आई, क्या कहते हैं, बैकएंड में वी यूज रस्ट, है ना।
अभी रस्ट भी मांगेंगे तुमसे। भाई जॉब मार्केट, टेक मार्केट का जॉब मार्केट इज लिटरली फक्ड अप हो चुका है, जस्ट लाइक कि आई होपिंग टू गेट अ प्लेस। ठीक है, 2026 में डायनासोर जैसे ढूंढना है ना, ढूंढना मुश्किल है, ऐसे ही फ्रेशर के लिए टेक जॉब ढूंढना मुश्किल है। इफ यू आर इन 20, अगर तुम टीयर 1 कॉलेज या टीयर 2 कॉलेज को, आई थिंक टीयर 2 टीयर 1 कॉलेज वाले तो उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं होती, लैपटॉप के आगे घर पड़े रहते हैं पूरे टाइम। ठीक है, वो शायद स्ट्रीमिंग देख भी ना हो, लेकिन तुम मोस्टली मेरे को पता है कि टीयर 2 या टीयर 3 होंगे, मतलब मोस्टली कॉलेज के जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे। तो यार तुम्हें क्या लगता है कि मतलब टाइप स्क्रिप्ट ब्रो, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, हाँ भाई नेक्स्ट जेएस भी मांगेंगे तुमसे। एंड क्या क्या और क्या होता है, नेक्स्ट जेएस मांगेंगे तुमसे, तुमसे और भी बहुत सारी चीजें होती है। एंगुलर 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 भी मांगेंगे तुमसे। ठीक है, ब्रो जस्ट सेड कि देखो भाई, इफ यू आर एनीवन लाइव स्ट्रीमिंग, ये जो नारुतो भाई है भाई, इनका तुम देख लेना क्वेश्चन चैट भाई, क्योंकि लिटरली बहुत सही बात बोली है टीयर 4 कॉलेज है ना, हाँ भाई टीयर 4। और कॉलेज का नेम बताना तुम अपना। नारुतो भाई, वैसे तुम्हारा नाम नारुतो है या फिर वैसे, ये तो नारुतो तो यार बढ़िया लगता है मुझे भी। तुम तो टीयर 4 के स्टूडेंट हो तुम, है ना? आई एम ऑल्सो अ टीयर 4 स्टूडेंट, है ना? तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, तुम भी डीएसए करते हो, अगर डेवलपमेंट करते ही होगे, है ना? डीएसए डेवलपमेंट क्या करते हो ब्रो, तुम दोनों डीएसए करते हो, डेवलपमेंट करते हो? डॉट नेट ब्रो, डॉट नेट भी अच्छी है वैसे। डॉट नेट की यार जॉब्स मतलब मुझे लिस्टिंग ज़्यादा दिखती नहीं है। अगर लिंक्डइन वगैरह पे जाओ, इंडीड पे जाओ, तो मतलब कम दिखती है मुझे। मतलब ये डॉट नेट अच्छी है क्या? क्योंकि मर्न स्टैक में तो मिल नहीं रही है, मैं सोच रहा हूँ स्विच करूँ कुछ दिनों में। लेकिन अभी तो पहले मर्न स्टैक की जॉब देखूंगा। ठीक है, बोथ। अच्छा, तो तुम डॉट नेट भी पढ़ रहे हो, मर्न स्टैक सब पढ़ रहे हो, बहुत डीएसए भी पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हो, है ना? या डीएसए डेवलपमेंट दोनों चीजें पढ़ रहे हो, तो मतलब तुम अभी बीटेक स्टूडेंट हो, बीसीए स्टूडेंट हो, या फिर मतलब फाइनल ईयर में कौन से वाले स्टूडेंट हो, थोड़ा हमें बताओगे? जस्ट लाइक कि थोड़ा भाईचारा बढ़ सके ऑनलाइन। बोथ, एवरीवन इज हाइब्रिड। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से तुम कोडिंग करवा लो, फ्रंट एंड करवा लो, बैक एंड करवा लो, यूआई करवा लो, स्टॉक मार्केट करवा लो, सब कर लेते हैं बंदे। मैं बीसी करके कोडिंग कर रहा हूँ, फिटनेस में इन्फ्लुएंसर बनने का भी ट्राई कर रहा हूँ साथ में। अभी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी है, और अभी कोडिंग भी पढ़ूंगा। एमसी, ओ ब्रो यू आर डूइंग ग्रेट वेल, ग्रेट वेल। तो मतलब अभी यू आर कंप्लीटली फ्रेशर, यू हैव जस्ट एनी जॉब एक्सपीरियंस? सो यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस ब्रो? यू डूइंग एमसी, मेरा भी एमसी करने का प्लान है। तो यार तुम भी बताओ, एमसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि टीयर 4 कॉलेज से यार बीसीए तो करके गलती कर दिया, क्योंकि दिस कंपनी जस्ट सिंपली रिजेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ कि मतलब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता एट द एंड, सिंपली तुम्हें बताओ तो। मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है, आई एम जस्ट सप्लाइंग मोर देन 300 एंड 400 कंपनीज इन 1 वीक ऑलमोस्ट। मैंने फोकस इज ऑन मोबाइल, अच्छा मोबाइल डेवलपमेंट में किया है। ओके, तो तुम नो मतलब यू हैव एन एक्सपीरियंस, you have an experience, yes and no, just simply write the yes and no if you have an experience in working as a tech job. तो डेवलपमेंट तो यार अच्छी चीज है। आई जस्ट फील कि यार तुम मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर्स गुड अपॉर्चुनिटी है अगर मैं टीयर 4 कॉलेज से कर रहा हूँ बीसीए तो। ब्रो आई एम फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली से है भाई, दिल्ली से। तुम कहाँ से हो ब्रो वैसे? So, यार देखो होम पेज तो बन चुका है,
साइन अप पेज भी बन चुका है, अब लॉगिन पेज पे काम करते हैं थोड़ा, है ना। लॉगिन पेज भी है ऑलरेडी क्रिएटेड। हमने कोड पता है पहले से ही कर रखा है, क्योंकि ना एक बार कोड को रीड करेंगे तभी समझ आएगा, है ना। कोड तो करते रहेंगे एकदम से, थोड़ा रीड करेंगे तो समझ आएगा कि अब देखो लॉगिन का कोड है, ये मैंने कोड किया था तब समझ आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके समझेंगे, कि करके मैं खुद को भी समझाऊंगा और ट्राई करूंगा कि तुम्हें भी समझ आ जाए, ओके। अच्छा, डेलहौजी यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। हाय ब्रो, हाय हाय। मैं भी लास्ट ईयर का ही ब्रो। लास्ट ईयर में जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, बहुत अच्छी बढ़ती है, मतलब 8 8 10 10 घंटे कोडिंग तो आराम से हो जाती है। वैसे तुम कितने घंटे कोडिंग करते हो ब्रो, जरा बताना मुझे कोई। मैं दिन के 5 घंटे कोडिंग करता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल देख के 2 घंटे, 3 घंटे खुद से। ट्यूटोरियल देख के कोडिंग कौन कौन करते हैं, पहले तो ये बताओ मुझे। ट्यूटोरियल हेल में कौन कौन फंसा हुआ है मेरे अलावा। मैं तो फंसा ही हूँ, मैं बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल हेल में मैं फंसा हुआ हूँ। मेरे अलावा तुम में से कौन कौन फंसे हुए ट्यूटोरियल हेल में, सिंपली बताना एक बार यार। 0 आवर्स ओ ब्रो, 0 आवर्स कोडिंग करते हो तुम तो। आई नो कि तो मैं इतना तो श्योरिटी ले सकता हूँ, तुम्हें हेलो वर्ल्ड को तो प्रिंट करना ही आता होगा, है ना ब्रो। हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट कर लेते होगे बिना ट्यूटोरियल देखे हुए। मैं भी कर लेता हूँ, बाय द वे। मी 0 आवर। देखो ब्रो, कोडिंग में मैं कोडिंग में अभी मंच स्टैक डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मतलब फ्रंट एंड हो चुकी है, बैक एंड भी हो चुकी है। अभी लिटरली मैं रिवीजन ही कर रहा था अपना बैक एंड का, मतलब कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा समझ रहा हूँ ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है, जीडब्ल्यू टू लॉग इन साइन अप कैसे डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो अभी मैं वही पढ़ रहा हूँ। मतलब चांस है कि इस फैब के अंदर मेरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है सिंपली। अब मेरे को रिवीजन करना है और थोड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी अब, है ना। Bro, I had an question. Why do most coder use VS Code? I tried it, but since I have OCD, it is too jump for me. What is an OCD, bro? I just can't understand. OCD is in new code editor? Oh, bro, sorry, sorry, sorry. You are just asking me. Sorry. I understand it. You just said obsessive compulsive. It's a mental health condition characterized by unwanted thought. ब्रो देखो, सबसे पहली बात तो ना, लाइफ प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? देखो ब्रो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू के लिए। प्रिपरेशन करने के लिए देखो, मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ। आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ नोशन टेम्पलेट where I just revise our to-dos, just go on front end. And here is just I created a basic front end, back end revision के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. I know most of the things, but I just revise because if you come in interview, they simply don't, they just don't want to just write the code. They just simply want कि तुम उनको explain कैसे कर सकते हो. कॉल बैक पे जस्ट सिंपली तुमसे पूछ लेंगे व्हाट इज इन कॉल बैक, बताओ डेफिनेशन बताओ। तुम उसके लिए कैसे तुम्हें प्रिपेयर हो तुम, वो मैटर करता है। तो अभी मैं फिलहाल प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। प्रिपरेशन करने का बेस्ट वे मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए तो होगा कि मैं मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन करूँ अपनों से, बड़ों के साथ, जो मेरे सीनियर्स हैं। वो भी यही एडवाइस देते हैं कि मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो दो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। सबसे पहला, क्लैरिटी पे, क्योंकि अगर वो तुमसे जितना पूछ रहे हो, तुम बना बना के ज़्यादा बोल रहे हो और स्मार्ट कर रहे हो, तो वो तुमसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। एंड दूसरी, तुम्हारी कम्युनिकेशंस, ठीक है। इफ़ यू आर इन इंटरव्यू फॉर द गुड टेक कंपनीज, दे जस्ट वांट कि तुम उन्हें चीज़ें समझाओ। वो चाहते हैं कि तुम्हें हिंदी में, देखो हिंदी तो अलाउड ही नहीं होती, अच्छी कंपनी में तो जाओगे ना, हिंदी अलाउड ही नहीं होती, ठीक है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत बेकार है। प्रॉब्लम फेस करी है इन इंटरव्यू, ओके। तो आई जस्ट कि अगर तुम हो उनमें से कि जिनको इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है, व्हेन इट्स कम टू स्पीकिंग नॉट इन रिटर्न, सो यार तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए भी है। देखो ब्रो, तुम कह रहे हो कि मैं कैसी तैयारी करूँ भाई इंटरव्यू के लिए। देखो इंटरव्यू के लिए देखो, बेस्ट थिंग मैं तुम्हें बताता हूँ।
अभी चलो तुम्हारे सामने लाइव इंटरव्यू देते हैं, वे टू प्रिपेयर डीएसए मोस्ट इंपोर्टेंट रिकर्शन। देखो भाई, देखो डीएसए के लिए रिकर्शन तुम्हें करना है ना, देखो अंडररेटेड चलन है कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं अभी इससे पढ़ रहा था, डीएसए अच्छा पढ़ाता है वाकई में स्टेप बाय स्टेप से। तो जस्ट लाइक कि रुको, देखो कौन सा कहा गया, कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल, ठीक है। दिस इज एन यूट्यूब चैनल जिसने ना डीएसए पढ़ा रखी है, किसमें हमें, जावा स्क्रिप्ट में। जस्ट लाइक कि कहाँ पे है वो, जिससे कि मैंने, देखो ये जो प्लेलिस्ट है ना, जावास्क्रिप्ट में डीएसए, ठीक है, इसमें रिकर्शन इसने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जस्ट सिंपली कि मैंने इसको लास्ट लास्ट ईयर देखा था, 2024 के नवंबर के आसपास देखी थी मैंने। फिर अभी बहुत सारी चीजें भूल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें रिकर्शन की जो प्लेलिस्ट है ना, इसने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है रिकर्शन। रिकर्शन शायद ऊपर ही रह गया क्या? ठीक है, देखो यार रिकर्शन की यहाँ पे 12 से शुरू होगी, रिकर्शन की जो इसने बता रखी है ना, तुम इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, इसने रिकर्शन अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड प्रो, तुम कह रहे हो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ इंटरव्यू के लिए, देखो बेस्ट थिंग, गो इन चैट जीपीटी एंड लेट्स क्रिएट अ मेन्यू। तुम्हारे सामने एक इंटरव्यू देता हूँ, ठीक है, बेसिक सा। नो वन इज मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज आई एम ऑल्सो ए बिगनर, ओके। तो मैं खुद प्रिपेयर नहीं हूँ, बट स्टिल यार कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कैसे होगा। सो लेट्स गो एंड क्लिक ऑन न्यू चैट एंड जस्ट सिंपली, I am a completely fresher and I just want you to take my mock interview for a front-end development internship. Okay, a very basic and beginner friendly. That's it. Just write कर लिया मैंने, और देखो क्या होगा, ये ना एक्ट करेगा एज अ इंटरव्यू की तरह। अभी तुम्हारे सामने लास्ट लास्ट दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ तुम्हारे सामने, क्या लास्ट बोल रहा हूँ भाई मैं, लास्ट तो बनी गई है हम सब। ओके एंड जस्ट कि मैं इसको बोलता हूँ, भेज देता हूँ मैसेज। तुमने बोला भाई कि मैं एक्सेंचर के इंटरव्यू से बाहर हो गया, और तुम बाहर क्यों हुए, तो क्या तुम मुझे मतलब रीजन बताओगे, मतलब कि एग्जैक्टली exactly ऐसा क्या हुआ कि तुम, भाई मैं एक्सेंचर के इंटरव्यू से बाहर हो गया, ओके। भाई बाहर हो गए, देखो यार फेलियर तो चलते रहता है। अभी मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैं अभी खुद से 10 से ज्यादा इंटरव्यू, देखो तुमने बोला आई डू स्टक वाइल टॉकिंग, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस की यार, हम स्टक हो जाते हैं व्हेन इट स्पीक टू कम्युनिकेशन। यार बहुत, कम्युनिकेशन यार बहुत वीक स्किल है, मतलब मोस्टली मेरे को लगता है मेरी खुद वीक है। सो आई एम जस्ट गो लाइव एंड जस्ट स्पीक इंग्लिश। मोस्टली मेरे को पता है कि मेरी आधी इंग्लिश खराब हो रही होगी, आधी बेकार होगी, बस ट्राई टू स्पीक जितना आई ट्राइड, मे बी इट विल इम्प्रूव इफ आई एम जस्ट शट माई माउथ एंड जस्ट बैठा रहूंगा उसके लिए कि यार मेरी इंग्लिश तो खराब है, आई एम जस्ट नॉट, मैं नहीं कर सकता। तो जस्ट लाइक कि नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना। तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक, आई जस्ट वांट यू कि बोलो यार, कुछ ना कुछ बोलते रहो, ठीक है। मैंने अभी शायद एक हफ्ते पहले, मतलब 1-2 हफ्ते पहले थोड़ा कंसिस्टेंट हुआ स्ट्रीमिंग को लेके, बट मेरे को इतना पता है इफ आई एम स्ट्रीम, अगर मैं इसी चीज को लेके कंटिन्यू रहूँ कुछ 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले से मैं स्टार्ट कर लेता, तो आई थिंक माई इंग्लिश विल बी बढ़िया। भाई इंटरव्यू चालू करो ना, अच्छा सॉरी सॉरी ब्रो, इंटरव्यू चालू करो, ओके। जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो जस्ट सिंपली, अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है मेरे से, सिंपली पूछा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकमिंग अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो चलो मैं आंसर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज नमन यादव एंड करेंटली आई एम फिफ्थ सेम इन बीसीए एंड राइट नाउ आई हैव ऑल्सो, अरे जस्ट लाइक, सॉरी सॉरी ब्रो, मैं ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है, एक बार फिर से बोलता हूँ, ठीक है। First of all, thank you to giving this opportunity to introduce myself. My name is Naman Yadav, and currently I am in fifth sem. And right now, I have also completed NILET O level from Infotech Institute and awaiting result of NILET A level. Okay. And I am a passionate JavaScript developer with a strong interest in front-end development. I'm also learning backend as well. I have created multiple projects using front-end front-end development like a portfolio website, weather API, and many more projects. And just like if you just click on write, इसने शायद ये भी डिटेक्ट कर लिया होगा, इसको मैं कट करता हूँ। ये देखो, अभी पता है क्या होगा, एंड जस्ट जो भी मैंने इसको बोला ना, मेरी आवाज ऐसे तुम्हें आ रही थी, मैं इंटरव्यू के जो बोल रहा था, मुंह दुख चुका है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा बोलता रहता हूँ आजकल में। सो जस्ट लाइक कि देखो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ।
और जैसे मैं एंटर किया ना तो इसने क्या बोला, देखो फीडबैक ऑन योर आंसर। ब्रो जो लाइव हो तुम देख रहे हो ना ब्रो, देखो और लोगों का 7-8 मिनट चला, मेरा इंटरव्यू 30-35 मिनट चला, सब अच्छे से दिया था और लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे, लाइक इंट्रो एंड प्रोजेक्ट, और उनका इंटरव्यू डन। बट मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे थे ब्रो, तुम्हें रिजेक्ट किया होगा। तो देखो यार फिर तो एक पॉलिटिक्स फॉलो किया भाई, मैं कहता हूँ 30-35 मिनट अगर तुम्हारा इंटरव्यू चला है ना, तो जस्ट सिंपली उन्होंने तुम में इंटरेस्ट शो किया है कंपनी वालों ने, एंड बट स्टिल तुम रिजेक्ट हुए हो। तो इसका मेन रीजन तो यार पता है, मैं तुम्हें खुद नहीं बता सकता, क्योंकि ना ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि अगर किसी कैंडिडेट का 30-35 मिनट इंटरव्यू चला है एंड दे स्टिल गेट फेस रिजेक्शन, सो इट नॉट मेक सेंस। बट बाकी अगर देखो तुम्हारा 35 मिनट चला है तो मतलब ना दे जिसकी तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि चलता है बिकॉज इंटरव्यू भी तुम्हें जज ही किया जाता है। अगर किसी को 7-8 मिनट में सीधा रिजेक्ट कर दे रहा है तो इन द सिंपल सेंस क्या बनता है उसको, कि उन्होंने जज कर लिया 7 मिनट में कि इस बंदे को उतना नहीं आता जितना हम चाहते हैं। बट इफ अ कैंडिडेट हु जस्ट स्पेंड मोर देन 30 to 35 मिनट इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि दे जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन एंड डिस्कशन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो जवाब रिस्पॉन्स दे ही रहा होगा ना। ठीक है। सो देखो, अब ये बेसिक इंटरव्यू चले, यहाँ पे क्या आया, फीडबैक ऑन योर आंसर। You introduce yourself politely, good professionalism, ठीक है। You mention your current education, you clearly said JavaScript and front-end interest, you talk about front-end, very important, where you can improve। देखो, too much focus on institute and exam, interviewer mainly केयर अबाउट स्किल्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मतलब जो मैंने बोला कि आई जस्ट कंप्लीटेड नाइलेट ए लेवल ओ लेवल फ्रॉम इन्फोटेक इंस्टीट्यूट, तो मैंने वहां पे अपनी एजुकेशन अप्लाई, बट इफ अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल दे जस्ट वांट मी वांट अ स्किल फ्रॉम मी, ओके। सो इन दैट टर्म आई